Okay, so the next point that we have is that how to wash burette and conical flask during titration. This is a question that is tested in paper 4 or paper 6 in alternative practicals. That how do you wash burette between titrations? Normally, students write that you can wash burette with water, which is wrong. If you wash it with water, you still have to wash it with something else. With burette, you'll have to make sure that you always wash the burette with the compound that you're going to put next in. जो आप कंपाउंड नेक्स्ट इसमें डालने वाले हो उससे आप इसको वॉश करोगे. लेट्स से अगर आप सोल्यूशन ए डाल रहे हो, इफ यू गोइंग टू वॉश फिल इट विद सोल्यूशन ए, then you have to wash it with solution A. You don't wash it with water. If you wash it with water, some of the droplets may remain in the burette and it can disturb the concentration of the compound that you're going to put in next, but dilute that compound. So you'll have to add more solution from the burette than you initially intended. आपको ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो डाइल्यूट हो गया होगा. तो नेवर वॉश इट विद वाटर, ऑलवेज वॉश इट जो आपने नेक्स्ट उसमें ऐड करना है. और कॉनिकल फ्लास्क को आप हमेशा पानी से वॉश करते हो. कॉनिकल फ्लास्क को आप, ठीक है, उसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो अगर क्वेश्चन आता है, कॉनिकल फ्लास्क को हम पानी से वॉश करते हैं और ब्यूरेट को हम उस चीज़ से वॉश करते हैं जो आपने उसमें नेक्स्ट ऐड करनी है. ऐसा